मेरा ना एक दोस्त होता था जिसको बहुत गुदगुदी होती थी। उसके पास ऐसे हम हाथ लेके भी जाए ना, बिना टच किए वो भाग जाता था। यूजुअली हमारे साथ भी वैसा होता है। अभी अगर मैं बैठा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है, सडनली आई फील बोर्ड, आई टेक माई फोन, आई स्टार्ट वॉचिंग द रील्स एंड समथिंग एल्स. If I'm having some sort of pain within my heart, then I'll look for some solution right away. But we never deepen our experience of something that is unpleasant to us. I have already explained that जब मेरे दिमाग में कुछ चलते रहते हैं, I just stand there, I just look at my thoughts कि क्या चल रहे हैं दिमाग में, कैसे चल रहे हैं, पैटर्न क्या है इस चीज़ का, तो उससे मुझे क्लैरिटी बहुत मिलती है. And that is not only one thing that has happened to me, but several incidents where something happened to me, and because of that, and because I put more attention to that, I did not run away from that. It gave me some sort of perspective that I would like to share to you right now in this video today. So एक बार हुआ क्या कि I was drilling in my home, और ड्रिल करते करते ना वो मशीन चला नहीं, अंदर घुसा नहीं वो बिट. तो मुझे लगा कि क्या प्रॉब्लम है, बीट ख़राब हो गया, क्या हुआ. तो मैंने निकाला उसको. देन आई सॉ उसमें मिट्टी लगी थी. सो आई थॉट कि यार मिट्टी लगी है, थोड़ा सा मिट्टी झाड़ने के बाद ही दिखेगा कि एक्चुअली बीट सही है या फिर वो ख़राब हो गया, घिस गया है. तो ना मैं इसको मिट्टी से छानने की कोशिश किया, थोड़ा सा ऐसे हटाने की कोशिश किया, जस्ट मे बी फॉर अ सेकेंड, मे बी आई जस्ट टच्ड इट एंड देन आई रिमूव्ड इट, और मिट्टी निकल गया. और जब मैं हाथ बाहर निकाला ना, जब मैं टच किया तो कुछ नहीं हुआ. जब मैं बाहर निकाला हाथ, माई हैंड, मुझे फिंगर जिस दोनों उंगली में से पकड़ा था ना वो बिट को मैंने, वो मेल्ट हो गया पूरा. वो इतना गर्म था. और जब मैं टच किया तब महसूस हुआ, नहीं जब मैं बाहर हाथ लाया तब महसूस हुआ. अब जितना मैं छाट रहा हूँ उससे फ़ायदा कुछ हो ही नहीं रहा, क्योंकि ऑलरेडी मेरे उंगली के जो सेल्स हैं ना, वो टिश्यूज़ जो हैं वो मेल्ट हो चुके हैं, वो डिफॉर्म हो चुके थे. तो पूरा वो एरिया पूरा वाइट पड़ गया था. और मेरे पास मैंने फ़ोटो भी लेके रखी थी, अगर मुझे मिला तो मैं अटैच कर दूँगा यहाँ पे. और तब ना मेरी शरीर की हर एक हार्ट बीट मुझे एक्सपीरियंस होने लगी. एवरी हार्ट बीट के साथ यहाँ पे टक 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 महसूस होता था. जैसे कि आपके हाथ में कभी कट हुआ ना, तो आपको महसूस होगा कि हर हार्ट बीट आपको यहाँ पे फील होता रहेगा. हर हार्ट बीट के साथ यहाँ पे वो टक 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 वाली महसूस होती रहेगी. जैसे अगर कभी टीथ का कुछ प्रॉब्लम हुआ, दांत पे अगर वो दर्द होने चालू हुआ ना, तब आपको हार्ट बीट महसूस होगी कि कैसे हर हार्ट बीट के साथ ना वो एक पेन आते रहता है. सो यूजुअली जब आते रहते हैं वो पेन ना, तो हम उसको सह नहीं पाते. एंड वी यूजुअली टेक अ पेन किलर और समथिंग विच discards the pain or reduce the pain to significant extent. बट उस दिन ना मैंने उस पेन को अवॉइड करने की कोशिश नहीं की. आई ट्राई टू एक्सपीरियंस दैट पेन, कि क्या है इस पेन के बिहाइंड द सीन थिंग. तो मैं बस वहीं पे बैठा रहा एंड आई स्टार्टेड एक्सपीरियंसिंग इट. हर टिक आई वॉज एक्सपीरियंसिंग इट वॉज टेरेबल पेनफुल. बट आफ्टर सर्टन पॉइंट ना वो पेन के साथ आई डोंट नो, आई अकस्टम टू दैट पेन और आई गॉट यूज टू दैट पेन, और I went beyond that pain, but that pain did not impact me much. मुझे उतना ज़्यादा फ़र्क उससे पड़ा नहीं. And somewhere I could feel that this pain is only for the body, it is not giving me any pain. So that is what I felt, that every pain that I'm having around me or inside of me or with my body, this pain never touched me. I always remain untouchable. And that is one incident that made me realize such a big fact about my life. But it is not a clear picture of it. It is just a small glimpse that could be something else happening within myself, that body and something of me is different. And this is not it. When I was in Samyama as well, there have been so much of pain in my ankle, in my knees, in my shoulder. So all this pain were there, but instead of trying to resist them, instead of trying to make a big deal out of it, I just left it the way it is. If the pain is there, let it be. So slowly, gradually, I started towards a certain aspect of my life in which, even if there is something from which we usually tend to run away, I'm most probably pushing myself to be there and try to experience what is happening to me in that situation particularly. जैसे कि रिसेंटली बोर्डम हुआ या फिर थोड़ा बहुत एंजाइटी स्ट्रेस वगैरह कुछ होता है कभी ना, देन आई ट्राई टू बी देयर इन दैट स्ट्रेस, आई ट्राई टू बी दैट इन दैट बोर्डम, कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है. ऐसे मन नहीं करता कुछ काम करने को, मन करता बस भाग जाऊँ, ये करूँ ही ना, बट आई जस्ट बी देयर. कभी कभार मन करता है किसी लोगों से आर्गूमेंट ना करूँ, क्योंकि वो जिस तरीके से बात करते रहते हैं वो बिल्कुल ही मज़ा नहीं आता उनसे बात करने के लिए, और जस्ट मन करता है कि इसको छोड़ के भाग जाऊँ यहाँ पर, बट आई स्टिल बी देयर. तो ये जो एक स्टेप पुश करने का
जो आदत मैंने बनाया है ओवर द टाइम, इट इज़ मेकिंग मी रियलाइज मोर एंड मोर अबाउट माई सेल्फ, and it is more and more giving me a clear picture that how there could be a small difference between me and something else. It is something that you can try by yourself as well. I do not want you to like put a pin on your finger. I don't want you to burn your finger, but what essentially you can do is you can put your legs in anthills, because I have tried that experiment as well. I mean, intentionally I did not try, but unintentionally sometimes I put my foot in the ant hills, and when the ant bites, usually we tend to just move it like that, but I try to feel the pain, I try to experience the pain, just to understand that what it is happening. And if you just go with the pain, just keep on watching that pain constantly, then you can realize easily that it is not there. I still remember Sadhguru saying in one of his video, when he was rushing towards some sort of a program, and he met with such an accident in which his calf area got torn, and because of which he could not go to the meeting, and he had to rush to the local medical support. He went there, the doctor said, I cannot do that, I cannot stitch it without anesthesia. Sadhguru said, no, you just stitch it, I do not have any time, I cannot be late for the meeting. So that guy, that doctor wasn't sure, but he made sure that he has to stitch because lots of blood were flowing. So he stitched it, and Sadhguru was there talking about so many things to the doctor. Doctor was sweating throughout the time, and at the end of the stitching, the doctor asked Sadhguru that, didn't you feel pain? Sadhguru said, no, I was feeling pain, I was tremendously feeling pain within my leg, but I did not make it a suffering. So that experience, that particular thing actually made me go through these kinds of pain. So even if I put my foot in the anthill, even if I touch a hot iron rod, despite of that also, I try to experience, I try to go through the same pain as Sadhguru was going through, just to experience that what he was talking, whether it is really possible to go through such a pain or not. So essentially, I would not say this anywhere else, and I would not like to say this, but I feel like saying it, that I have gained so much of confidence right now to go through any kind of pain in my life, that even if death approaches me, any way the death would take my life, whichever way, it might become painful, but I will be conscious throughout that pain. And that is all I know about myself, at least now. I may not get enlightened, and I do not know what is enlightened in the first place, but if any kind of pain happens to me, even when I am leaving this body, for sure I'll be conscious. I'll be looking at that pain, and what is this pain and where it is coming from. So if it is possible for you, also try to experience such kind of a thing, because every single time you push such kind of a boundary within you, it gives you a limitless possibility and sense of freedom within you. Thank you so much for watching. I'll see you in the next video. Bye for now.